R to R ladder type D2A converter. Okay, so we have a circuit. Say we are using op-amp, okay, in non-inverting mode. Okay, so we have, say, a resistance here 2R, then we have resistance here R 2R, okay, then we have resistance here R, then we have here 2R, okay, so 1 2 3 1 2 3 4 5, okay, and here R, this is 2R, and we have R, and this is we have 2R, okay, and this is grounded. Now suppose we have some 4-bit number, okay, so 4-bit number means this is my term D3. 4-bit number means 4-bit, okay, 4-bit means what? D3, D2, D1 and D0. So this is D3, okay, this is D2, this is D1, and this is my D0. This is most significant byte, and this is a low significant byte, okay, and this is the voltage follower circuit. So here I am putting a voltage follower circuit. Am I getting V output? Okay, now because this is the voltage follower circuit, तो जहां पर जितना भी वोल्टेज आएगा इस रेजिस्टेंस से अक्रॉस, ओके, वही वोल्टेज यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर हमको यहाँ मिल जाएगा, isn't it? वोल्टेज फॉलोवर सर्किट है. वोल्टेज फॉलोवर सर्किट में क्या होता है, जो भी वोल्टेज आप यहाँ देंगे, ओके, वैसे भी ओपम की क्या है, आइडियल ओपम में इन दो टर्मिनल्स पे वोल्टेज सेम रहता है, तो जो वोल्टेज यहाँ पर आएगा that will voltage go here, and through voltage follower circuit this voltage will reach to the your V output. Okay, now we have to calculate voltage across this voltage. Okay, suppose I'm applying some high voltage here. Now I'm applying some E voltage here. Say sir मुझे op-amp नहीं आता sir. Okay, so E voltage here, this is grounded. Okay, op-amp तुमने किया नहीं पहले? नहीं सर. तो ओपम में क्या करते हैं, ओपम में क्या होता है, आइडियल ओपम में क्या होता है, इस पॉइंट पे जितना वोल्टेज होता है, ओके, उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होता है. सो और यहाँ पर कोई सर्किट नहीं है, ये दिस इज ओपम इन नॉन इनवर्टिंग मोड. सो नॉन इनवर्टिंग मोड में क्या आपका वी आउटपुट कितना होता है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ओके, 1 प्लस RF upon R1. Okay, now here feedback resistance है नहीं, RF is 0. If RF is 0, okay, so what will become, this become V naught equal to V1. So नॉन इन्वर्टिंग रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज लगाओगे वो वोल्टेज आपका यहाँ आ जाएगा. जिन्होंने ओपन किया उनको समझ में आ रहा होगा ना? यस सर. हाँ, तो अभी ये तुम जिसको ओपन में आता है वो समझ लो कि ये वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दोगे आप, वही वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिलेगा. अब यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे बताओ? क्या करेंगे वोल्टेज निकालने के लिए यहाँ पर? So if I want to calculate voltage here, I have to simplify this circuit. Okay, now this resistance is ground, this resistance is ground. Okay, so now you have to calculate what effective resistance. यहाँ पे कोई resistance नहीं है, यहाँ resistance ला देना. Okay, यहाँ पे कोई resistance नहीं है, लास्ट वाले पे कोई resistance नहीं है, जहाँ तक बिट बाइट है वहां तक ही था. Okay, now ये और resistance ये पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है, तो इनका effective resistance क्या हो जाएगा? R. ओके, सो इन दोनों को हटा के मैं R कर दे रहा हूँ. ओके, R. फिर ये और रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं है? ये सीरीज में. ओके, सो ये 2R हो गया.
ओके 2R हो गया। अब ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? So these become parallel. So now effective of two resistance become what? R. So I write R here sir. R. Okay. So this become R. Again, this R become 2R. Okay. And this become parallel. Okay. Again, this 2R are parallel. So effective become R. Okay. This become effective become R. And now this again R and R. This become 2R. Okay. So here I have resistance 2R. Okay. Now my current will go from here. Now अब ये पैरेलल की अब ये पैरेलल की सीरीज में है, सीरीज में ना, बिकॉज यू वोल्ट करंट विल गो फ्रॉम हियर, यहाँ से यहाँ, और यहाँ ओपन में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में कोई करंट जाता नहीं है, तो यहाँ करंट जीरो है। ओके यहाँ जनरली करंट जीरो है, तो सारा करंट यहाँ जाएगा, जो करंट यहाँ से जाएगा वो इधर 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 फॉलो करेगा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। वो रेसिस्टेंस का जो पैरेलल सम लिया ना, वो एक और बार बताओगे? हाँ फिर अब दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, बताते हैं। ठीक है, ओके सर। सो नाउ अभी ये कर लेते हैं, फिर बताता हूँ, दोबारा प्लॉट करेंगे, बताएंगे। ठीक है, सो नाउ दिस दिस 2R ओके, दिस सीरीज, सो वोल्टेज अक्रॉस दिस V0 क्या हो जाएगा? V0/2। ठीक, हाँ वेरी गुड। सो पहले यहाँ पे करंट आएगा, 4R रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा E/4R। अगर मैं यहाँ पे करंट कैलकुलेट करूँ तो ओके, इसमें, एंड V0 क्या हो जाएगा? V0 विल बी ओके I into R। सो I कितना है आपका? E/4R ओके, इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 2R, R कैंसिल, I get E0। So now my V0 is equal to E/2. Okay, V output is equal to E/2. Okay, that means if I have a digit 1000, okay, so this output is what? When input is 10001 0001, because we have 4 digit. Okay, so I have only used MSB. I have given high voltage only to MSB. So when I use 100, I get output equal to E/2. Okay, this is clear? Okay. Yes sir. Now So what you said last time, please repeat. if an input is 1000 in this ladder circuit, okay, so I am getting the output equal to V0 equal to E/2. Yes. सर हाँ, ये I equals to E/4R कैसे हुआ? अरे तो अभी क्या बता रहा था मैं तेरे से, ये करंट सीरीज में है, 2R 4R नहीं हुआ, तो करंट क्या होगा? ये तो समझ, I equal to ये तो ये हाँ, तो I E is the voltage between हाँ, ये रेजिस्टेंस 4R नहीं है क्या? यस सर 4R तो है। तो करंट कैसे निकलेगा? वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा क्या भाई? 4R। ओके ओके सर, तो सर वो तो फिर V0 वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है सर? ये लिखा हुआ नहीं यहाँ पे V0 वोल्टेज, इस और रेजिस्टेंस E0 ये तो बैटरी है। ओके 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 सर। okay, so let me redraw the circuit again. So I have 1 2 3 4 5. Okay, so this was my circuit R. Okay, 2R, again R, 2R, 1 2 3 R, 2R, and लास्ट में क्या है? लास्ट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, we have only 2R which is grounded. Okay, so this was in first case this was grounded. Okay, so first was this was high, this was 0 0, this is ground means 0 0 0. Okay, so now what we have done, these two resistance are in parallel, तो इनका इफेक्टिव R हो गया, फिर ये R 2R हो गया। ओके, इनका इफेक्टिव फिर R हो गया, फिर ये R 2R, फिर ये R फिर R 2R हो गया, और ये पैरेलल हो गया, तो इफेक्टिव R हो गया, और लास्ट में फिर ये R 2R हो गया, टोटल 2R प्लस 4R हो गया। सो वी हैव V आउटपुट इक्वल टू E0/2। ओके क्लियर? आगे चले अभी नेक्स्ट सर एक बार ओपन सर्किट बता दीजिए। ओपन सर्किट कौन सा वाला? भी इफेक्ट ये रेजिस्टेंस है आपका ना। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा क्या 2R कितना होगा?
आर नहीं सर, ये नहीं जो आपने अभी ऊपर उसके संग V0 के संग बताया, V0 के संग क्या? इन्वर्टर के संग आपने बताया था ना। ये वाला यस सर। भी, या तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा? V0 अपॉन V1 इक्वल टू 1 प्लस गेन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस RF अपॉन R1। तो यहाँ RF 0 है, कुछ RF नहीं है। ओके, सो वॉट एवर यू अप्लाई सेम V0 इक्वल टू योर V1, तो जो यहाँ पे लगाओगे वोल्टेज वही यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर। Okay, now second case, what I'm doing, second case, now put the input is, my input is now earlier my input was this one, now I'm doing my input is this one 100. Okay, so now this is ground, this is the most, now this is the most significant digit. Okay, this is battery. Okay, this is the battery E, and this is grounded, this is also grounded. Okay, now calculate the V output again. In this case, calculate the V output again. सर हाँ, सर 0100 में ये सेकंड में बैटरी लगेगा, कैसे पता चल रहा है? और मैं लगा रहा हूँ ना भाई, ये मोस्ट, ये 0010 है ना, 1 का मतलब हाई वोल्टेज, 0 का मतलब लो वोल्टेज, तो ये 0 है, तो यहाँ हाई वोल्टेज लगा रहा हूँ सेकंड पे, या 1 है तो यहाँ 0 लगा रहा हूँ, यहाँ 0 लगा रहा हूँ बाइट पे। ओके, ये मेरा D3 है, ये D2 है, ये D1। ज्यादा खेल लिया क्या आपने, डिजिट खेल लिया क्या? सर 1 2 3 4 थर्ड 5, पे 1 1 आ रहा है 2 ना 3 सर। 4 5। ओके, सो 5 मीन्स 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ तक आना चाहिए ना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो जी आना चाहिए। सो दिस इज योर D0 फर्स्ट। ठीक है, हाँ बोलो। सर मेरा डाउट ये है कि 1 थर्ड प्लेस में है और हाँ, ई इधर सेकंड प्लेस तो में उल्टा कैसे आ रहा उल्टा है? चल रहा है ना भाई, ये आपका D3 है, ये D2 है, ये D1 है, ये D0 है, ये आपका यस पहले पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट था, आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट ये है। ओके, पहले यहाँ किया, यहाँ किया, ये उल्टा चल रहा है, ये 1 2 3 पे नहीं है। ओके सर, Okay, ओके सर। so now calculate again. So again, if you calculate, okay, what will become this 2R again? You have R. हाँ, कितना आएगा तो सुल्तान? R. Okay, and this again 2R. Okay, 2R and 2R again R. Okay, so this become your R. Okay, and this become 2R. Okay, and so now I have this circuit. Okay, now I have this circuit. तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे पास क्या है, I have this 2R। सर E0/3 होगा नहीं, आउटपुट। अच्छे से निकाला नहीं तुमने। ठीक है, we have 2R. Okay, 2R, and we have here again this 2R. Okay, and then we have this battery here E. Okay, and then we have here R, and then we have here 2R. Okay, now I want voltage here. So what should I do? बताओ कैसे करेंगे? तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ओके, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये दिस इज R. ओके, so how can I draw a circuit? I want voltage here, तो इसको ओपन कर दो। I want voltage here, तो you can make it open सर्किट। वोल्टेज निकालना यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, मेरा बैटरी है E। ओके, दिस इज माय बैटरी, यहाँ से 2R रेजिस्टेंस चल रहा है, सो मैंने 2R रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया, 2R। ओके, फिर 2R के बाद में यहाँ पे एक 2R है, 2R। okay, equivalent resistance I'm plotting. Okay, and this is R, and I'm making this is open, so I'm making this is open from here, and this is my battery. Okay, so this is my circuit, 2R, this is grounded, so I'm starting from here, 2R, then this resistance 2R and current going here R. Okay, now I want to calculate open circuit voltage. तो open circuit voltage कितना आएगा? Now current will start from here. Okay, क्योंकि यहाँ ओपन है। सर ये एक बार और समझा दीजिए ओपन वाला। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मुझे निकालना है ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो मैंने सर्किट को इसको हटा दिया, 2R को हटा दिया। ओके, अब ये रेजिस्टेंस आ गया, ये मेरा सर्किट है।
अब यहाँ से क्या हो रहा है, करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है E से 2R, तो E से 2R, ओके, फिर यहाँ इस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है, एक जा रहा है 2R में, तो एक चला गया 2R में करंट ग्राउंड में, और एक R है तो ये R चला गया इधर, ठीक है। समझ गया। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आएगा, वी ओपन कितना आएगा, वी ओपन ये E 4R, ओके, सो E अपॉन 4R करंट इंटू 2R, ओके, तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या आएगा, E/2, ओके, E/2, एंड रेजिस्टेंस कितना है, R थेवेनिन कितना है, ये तो क्या V थेवेनिन, ये आपको क्या V थेवेनिन, ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब V थेवेनिन, और रेजिस्टेंस R थेवेनिन कितना है, R थेवेनिन कैसे लिखा, R/2 R थेवेनिन के लिए इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो शॉर्ट सर्किट तो ये 2R क्या हो जाएगा, R 2R हो गया, ओके, वेरी गुड, 2R। सो नाउ माय इफेक्टिव सर्किट इज व्हाट, आई हैव अ बैटरी, इसी को चेंज कर रहा हूँ, नाउ आई हैव अ बैटरी, ओके, आई हैव अ बैटरी E/2, okay, then I have resistance 2R, okay, and finally ये resistance नीचे वाला resistance, ये तो यहाँ का था, हमारे इक्विवेलेंट निकाल दिया हम लोगों ने, now we have resistance है 2R, okay, and this is connected to your inverter, किसका mic on है, now this is E, now I want voltage here, so again the current will be what, current will be voltage E/2, okay, divided by 4R into 2R, and volt V open or actually V output जो हमको चाहिए ये वाला V, okay, V naught will be what, E/2 4R into 2R, so R cancel, 1/2, so this will come E/4, okay, this will come E/4, that because of 0 1 1 1 1 0, output is E/4, okay. Now similarly what I can do, अब नेक्स्ट इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ओके, सो अभी मैंने निकाला है 0 1 0 0 के लिए, ओके, देन आई विल कैलकुलेट व्हाट, देन आई विल कैलकुलेट फॉर 0 0 1 0, इसके लिए निकालूंगा, तो ऐसे ही कैलकुलेट करते जाएंगे, तो उसके लिए क्या आएगा, अभी E/2 पहले E/2 आया, E/4 आया, फिर E/8 आएगा, ओके, सो व्हेन इनपुट इज 0, okay, 0 1 0, then that time your output will come E/8, okay, and then again if you when your input is, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, input, when your input is, okay, 0 0 0 1, okay, that time your V output will be E/16, okay. So in this way you can calculate, okay, the voltage corresponding to each bit, okay, if you have 1 1 है, so each bit you can calculate, okay. Now what is the general formula for bit, okay, so I'm removing this one, dubbing this one, okay, so okay, so now if I have general formula, so the general formula of V output is E upon 2 power n minus n, okay, where n क्या है, total number of binary input, जैसे अभी के केस में यहाँ पर binary input 4 था, okay, and what is small m, position of 1, okay, position of 1, okay, for example हमारा V var D3 D2 D1 D0 समेशन होगा ना फिर तो सर, हाँ, फिर तो सर समेशन होगा सर उसके साथ, समेशन क्यों होगा, अभी वो करेंगे अभी तो, अभी जैसे मुझे सपोज आई वांट टू कैलकुलेट फॉर D3, तो D3 के लिए कैलकुलेट करना है, तो V आउटपुट D3 के लिए कितना है, D3 के लिए होगा E upon 2 4 digit, number is 4 digit, so 4, n is the small thing, this is dn, they are dns, okay, dns, yes so 3 4 - 3 1 हो गया, तो ये E/2 हो गया,
Similarly, d by 2 के लिए कैलकुलेट करना है Yes, sir. v output. Okay, that will be e upon what? E upon by 4. 4 minus 2. 4. Okay, e by 4 हो गया. 2. Yes, sir. d1 v output हो गया e upon 2 4 minus 1 e upon 8. Okay, and d0, the weight of d0 v output is equal to e upon 2 4 minus 0. Okay, so 1 e upon 16. ये तो एक चीज है. Okay, now now I have to calculate for any general bit. जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का कोई भी हमको जनरल फार्मूला चाहिए. अब एक ही बिट थोड़ी निकालते फिरेंगे. ओके, आई वांट अ जनरल फार्मूला. जनरल फार्मूले में भी ये भी है कि अभी तो मैंने क्या सबको हाई वोल्टेज को ई दिया. हो सकता है वोल्टेज ई ना हो. हाई का मतलब क्या होता है? कहीं पे मैंने 10 वोल्ट दिया, कहीं 5 वोल्ट दिया, कभी 2 वोल्ट दिया, 3 वोल्ट दिया. ऐसा ही पॉसिबल है ना? Right now I have given E everywhere E. But it's not true. Okay, it can be anything. So now write the total voltage. Okay, general formula. So in order to calculate general formula, I will sum it. So for first term, most significant reason, I'm getting E by 2. उसके बाद next I'm getting E by 4, and the next I'm getting E by 8. Okay, and so on. So this is I'm getting for e power. If I say this is a n. Okay, so then this is 2 power n. And if I say I have a term from 0 to vn minus 1, because when we write digit, I write d3, d2, d1, d0. So I am starting from 0. Okay, so if I start from 0, then this term is vn minus 1. Okay, so suppose I am giving voltage at vn minus 1 here. I am giving voltage vn minus 2 here. Okay, I am giving voltage vn minus 3 here. So here voltage will be v0. Okay, so in this case I can write the summation. I can take 2 power n common. Okay, if I take 2 power n common, so I will be having v0 2 power 0, v1 2 power 1. Okay, v2 2 power 2. Okay, so on. At the last, what I'll having? I'll be having vn minus 1 power क्या आएगा? 2 n minus 1. Okay, n minus 1. 2 n minus 1. Okay, so this will be my general formula. So if I use this formula, I can calculate the this binary equivalent digital output. Okay, analog output for any digit. Okay, so for example, just now I have calculated what when my input was 10000 1200. Okay, so now you can put these values here. Okay, so I can put v00. Okay, I have 4 terms: v00, v10, v20. So if I use say the same formula, I have only v3, 0, v0, 0, v10, v20. Only I have vn minus 1. So what I'll get? I'll get vn minus equal to e. Okay, so e into 2n minus 1 upon 2n. तो वापस क्या आ गया? e by 2. ये पॉइंट क्लियर है? Yes. Okay, so now you can take any type of input. आप ये v0 v1 को अलग अलग भी कर सकते हो, सेम भी कर सकते हो. वो क्वेश्चन पे डिपेंड है कि ये बोल देगा ये आपका इस पे आपने 5 वोल्ट दिया, सेकंड बना के दे देगा. इस पे 5 दिया, इस पे 10 दिया, तो सब पे सेम भी दे सकता है. सेम देगा तो आसान हो जाएगा. ओके, वोल्टेज. सो नाउ सपोज इसी फॉर्मूले में अगर मुझे ये निकालना है, 0 1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा आंसर बताइए? सो मेरे पास चार टर्म का है, तो 4 टर्म हो जाएंगे मेरे पास. ओके, सो अगेन व्हाट विल हैपन? Okay, I have up to here up to d3. So I will take what? Vn minus 2. Okay, Vn minus 2 is e. Okay, 2n minus 2, and this is 2n. Okay, so what I'll get? I'll get e power 4. So in this way you can calculate for any digit. Okay, so now I'm giving one question. ये clear है? Is this clear? सर हाँ. Yes, sir. सर VA equals to E by 2 E by 4, ये मतलब D1 D2 D3 ये वाला टर्म्स मतलब जो वोल्टेज निकल रहा है वो उसको Yes, टोटल हाँ. ऐड ऑन कर रहा है ना? हाँ. ओके सर. Okay,
So this is you Sir. just remember this formula. This is general formula for any binary digit. ये याद कर लो बस. हाँ बोलिए. Yes. सर at a time only one is present, ऐसा कुछ है क्या? कैसा मतलब? सिर्फ एक ही नंबर 1 होगा. नहीं ऐसा नहीं है. नहीं ऐसा नहीं है ना. 0 1 भी हो सकता है ना. अब तो कोई भी कुछ भी हो सकता है भी. कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है. और हर वन की वैल्यू भी अलग हो सकती है. हर वन की वैल्यू भी अलग हो सकती है. सेम भी हो सकती है. वो क्वेश्चन पे डिपेंड है. आपको सर्किट बना के देगा ना एग्जाम में. क्वेश्चन पूछेगा ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है. और they can give same also. This all the 1 is 10 volts. Okay, and all the zeros are 0 volt, like that. Now they say zero value is 2 volt. Okay, and high value is 5 volts. So any value they can give. Now if using this formula you can calculate analog equivalent. Okay, so for सर ये एग्जांपल एक बार बता देते हैं सर. हाँ, ये बता कैसा E/2 है? हाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ ना. Okay, now calculate 11010. Okay, you have to calculate the analog equivalent of this binary input, and you have given all zeros are okay 0 volt and ones are equal to plus 10 volt. So tell me the answer. So calculate total V output and full scale voltage. Okay, you have to calculate full scale voltage also. तो फुल स्केल वोल्टेज के लिए क्या करेंगे? फुल स्केल वोल्टेज के लिए क्या करेंगे बताओ? MSB को देखकर. फुल स्केल वोल्टेज क्या होती है? हाँ, सब जगह 1 सर. सब जगह 1. वेरी गुड. फुल स्केल वोल्टेज का मतलब क्या है? सब जगह 1 मैक्सिमम वोल्टेज. सो दिस नंबर 1 2 3 4 5. सो 1 1 1 1 2 3 4 1 2 5. तो पहले स्केलर निकालो फिर स्केलर निकालो. बताओ कितना आ रहा वोल्टेज using this formula. Now all zeros are 0 volts and all ones are your plus 10 volts. निकालो कितना आ रहा है? So if I use the formula for 5 digit 1 2 3 4 5. Okay, so what is the formula? B0. Okay, 2 power 0. 310/32. और तो फाइनल आंसर बताओ. ओके मुझे आंसर क्या बी 2 1 जस्ट V2 2 power 2 V okay plus V3 2 power 3. So 1 2 3 4 5. Okay, 1 2 3 4. Now V4 2 power 4. Okay, so I have B power 2 power 4. So 2 हाँ 2 power 5 होगा सर. 2 power 5 होगा. ओके 2 power 5. ओके ये Vn minus 1 है ना. नाउ दिस इज 0. तो 0 V1 is 1 10 volts 10 into 2. V2 is 0 V2 is 0. Okay, V2 is 0. So 0. So V3 is 1 10 1 मतलब 10 88. Okay, and V4 is again 1. So 10. So 10 into 16 upon 32. Okay, so this become 20 plus 80 plus 160 upon 32. So this is become 100. Okay, 260 upon 32 कितना आएगा? Sir 8.125. Yeah, 8.125. Okay, so your answer is 8.125 Sir. volt. Yes. हाँ सर इसमें V1 और V3 0 है ना हाँ सर? हाँ तो 0 रखा ना मैंने. 0 रखा ना मैंने. V0 और V2 0 है ना सर? V0 0 है, फिर V2 0 है. यस V2 0 है. यस ओके, और बाकी जो 1 आ रहा है वो 10 वोल्ट का है. that is 10. Yes. Okay, that is 10. Okay, The full scale voltage 9. Okay, now The similarly full scale voltage 9.68. yes, now if you put 1 1 1 1, if you get full scale voltage. Okay, full scale voltage. Okay, that will become 9.6. Okay, 9.6875 volt. Okay, so you can use this formula
to calculate full scale voltage, or you can do what, you can calculate for each digit. जो मैंने फॉर्मूला बताया था पहले 2 वाला, कौन सा वाला बताया था, E upon 2 power n minus n. So you can calculate for each digit and then you can sum. Okay, either you use this that formula or you can sum. If you sum, then it will come what, for MSB it will come 5. Okay, MSB, then it will come 2.5, then it will come 1.25, then it will come, okay, 0.625 and 0.3125. Okay, and final answer will be 9.6875. You can use any method. You can calculate for each digit and sum it, or you can use this formula directly and calculate. Both are equivalent. Clear? Okay. Yes, sir. So I am erasing this one. Mic किसका on है? Now the next is the weighted okay register type. Okay, the weighted register type means earlier we have used this non-inverting configuration. Now I'm using inverting configuration. Okay, so I have resistance R. Okay, this is my D3. D3 MSB. Then I'm using 4 digit again. Okay, this is my LSB. D0, D1, D2. Okay, this is my R, 2R, 4R. Okay, 8R. Okay, and this will give me what, this will give me attached to now this, attached to this one here. Okay, and make it your non-inverting terminal grounded, and we have here resistance here RF here. Okay, RF. Now I want voltage here, V0. So what is the formula for V0? How can I calculate V0 here? Minus RF by R1 into P input. So if you are more than one inputs, so I can use superposition principle. Okay, Yes, I sir. can make it 0. Yes, I can sir. calculate for this one. So if I use the superposition principle, I can calculate the formula for this in non-inverting is what, the gain formula is V0 upon V1. Okay, into क्या आएगा, minus RF by equal to Sir, minus equal RF to minus RF by upon R1. R1. जो भी resistance होगा RF is common, and this is the R1. Okay, so I can use the V output. Okay, V output equal to, so I have here RF. Sir, Okay, so D3 into RF upon R. Okay, then minus D2 RF upon 2R. Okay, then minus D3 RF upon 8R minus D3 D2 D1. Okay, and then D0 RF upon, this is R, 2R, 4R, and then we have 8R. Okay, and if you take common, okay, if I take minus RF upon R common, so then this will be what, this will be your D3 simply plus D2 by 2. Okay, plus D1 by 4. Okay, plus D0 by 8. So this is your output, final output. Now D3 D1 D0 value will be given, digit कौन सा digit है, accordingly you can calculate, okay, your voltage. So for example एक question ले लेते हैं. Let us say one question is there. Okay, so ये मैंने 4 bit के लिए किया है. If there are n bit, तो formula ऐसे चलेगा. This is a simple formula. Okay, if it is n bit, resistance will be keep on doubling.
R, 2R, 4R, 8R, 16R. In this way, you can do it. Okay, so no need to write the general formula. Okay, you can just keep on adding this. Okay, so here d power 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4. They'll be keep on. You can keep on adding. Okay, so now सर कब इन्वर्टिंग और कब नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प हम यूज करें ये कैसे वो सर्किट में नाम बोलेगा ना. दिस आर दे विल गिव सर्किट or they use circuit name R to a ladder circuit or the weighted resistor type circuit. Okay. ओके And आप निकाल कर देखना ऑलमोस्ट सेम भी आता है ये फॉर्मूला सेम ही बनता है. देख लेना एक बार चेक करके. वैसे तो क्वेश्चन में देगा ये रजिस्टर्स का ये नाम बोलेगा ना. weighted type resistors और किस टाइप का रजिस्टर है. So I am giving you question. Okay, for the 4-bit. Okay, for 4-bit weighted register. Okay, weighted okay register D2A converter. Okay, जो भी क्वेश्चन ये था, calculate the weight of each input bit. Okay, number the weight of each input bit. Okay, each input bit ये पूछा है तो. and last ये पूछी asked the full scale voltage. Okay, they have given RF value. RF equal to R1 equal to 1 kilo ohm. Okay, and they say 0 equal to 0 and 1 equal to 5 volts. Calculate. सर इनपुट को कितनी वोल्टेज है? इनपुट में 0 और 5 0 to 5. ओके, सो 4 बिट रेजिस्टेंस है. 4 बिट का तो ईच बिट के लिए निकालो. पहले तो ईच बिट के लिए 4 बिट है. ईच बिट के लिए मतलब क्या निकालना है आपको? पहले निकालना है 100 के लिए. ओके, 100 के लिए. फिर 10, दिस इज योर D3 मतलब क्या हो गया ये 1000. ओके, फिर D2 के तक निकालना है आपको 010. ओके, देन यू विल कैलकुलेट फॉर D1. ओके, D1 मींस यू हैव टू 0010, देन D0 0001. ओके, सो व्हेन यू यूज द फार्मूला फॉर D3 all the terms are 0, only D3 is 1, that D3 is 5. Okay, so and similarly you can write in this way and you can calculate. सर फॉर ईच बिट -5 वोल्ट है. +5 वोल्ट है. +5 माइनस का लिखा है, +5 वोल्ट है. सो नाउ फॉर एग्जांपल आई हैव टू कैलकुलेट फॉर D3. ओके, सो D3 के लिए क्या आएगा फॉर्मूला? सो D3 आई हैव टू कैलकुलेट D3. सो V आउटपुट इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? क्या था हमारा अभी? द फॉर्मूला वाज -RF अपॉन R1. ओके, D1. ओके, सॉरी D3 D2 by 2 D3 by 4 D3 D2 D1 and D0 by 8. This was the formula. Okay, now RF R1 value is 1 kilo ohm, has become 1. Okay, now D3 is what? D3 is 1. This is 5 volts. It's 5 volts, others are 0. This become -5 volts. Okay, this become -5 volts. This become -2. इसका क्या हो जाएगा D2 का? -2.5 volts. तो ये 0 ये हो जाएगा बस 2.5 5/2. This will become -1.25 and this become what? This become D0 equal to your 1.25 का हाफ कितना होता है? 0.625. ओके, सर यहाँ पर तो सभी रेजिस्टेंस तो सेम है ना? हाँ, सभी रेजिस्टेंस तो सेम है, तो D0/2 D0/4 क्यों करेंगे? रेजिस्टेंस यूनिट है. R की वैल्यू दे रखी है, R1 की वैल्यू R1 की वैल्यू दे रखी है 1. बाकी सब तो डबल तो करना पड़ेगा सर्किट में. ओके Okay, so this is your okay. Similarly, full scale voltage कितना आएगा? Full scale voltage -9.375 वोल्ट. okay, full scale voltage 9.375. full scale voltage you can put 111. I am directly writing the answer that for full scale voltage. Okay,
minus 9.375. Okay, minus 9.375 volts. Clear है? Okay, let me check some more problem. Okay. Sir, can you please explain how we will calculate full scale voltage? Full scale voltage means you have 4-bit number. Okay, Yeah. that means number is your 1 1 1 1. Okay. Yeah. So now for Yes, you sir. can put in that formula D1 also, D3 1, D2 1. 1 means 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts. Or you can sum this, or you can sum these voltages. Either sum these voltages or you can use this D3 D3 D2 D1. Okay. Okay. Thank you, sir. Now I'm writing one more question. Okay, you have to calculate what is the largest value of output voltage from an 8-bit D2A counter, D2A digital to analog counter that produces 1 volt. Okay, 1 volt for a digital input given as input of 0 0 1 1 0 0 1 0. ओके, सो अभी ये जनरल क्वेश्चन है, अभी जो किया उस पे बेस नहीं है. दिस इज सिंपली you know that any analog output is proportional to given digital input. Okay, so we know the analog output is equal to what? K into digital input. Now in this question they have given, this says if you give this much digital bit, you get the output this one. Okay, 8-bit counter. So what is the largest value of voltage? Largest means all are 1. So this one they are given. Now there are 8 1 2 3 4 5 6 7 8. For this digit in binary, you have to calculate the V output. You have already given this is given. Okay, and you have to calculate for this one. कैसे calculate करोगे? So सर पहले RF by R का रेशियो निकालने के नहीं, बाद RF तो इसमें कुछ दे नहीं रखा है. ये रेजिस्टेंस वो वाला नहीं है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है. ना तो ये लेडर टाइप है, ना तो वेटेज टाइप है. ये जनरल क्वेश्चन है. Okay, so for this they are given one input 1 volt. So how will you solve this one? I want first the weight of LSB. I have given this one. अब ये इसका digital equivalent क्या है? If you say 0 0 1 1 0 0 1 0, इसका digital equivalent क्या है? So if I take digital equivalent, this is 0 2 power 0 1 2 power 1 0 2 power 2 0 0 2 power 3. Okay, and then 0 2 power 4 plus 0 2 power 5. Okay, 0 नहीं 1, sorry 1 1, and then again all things are 0. So the analog equivalent of this digit, okay, analog equal to this digit is, you have 2. Okay, 2 plus here 2 plus 4 means 8. Okay, 8, and then you have 32 16 and 32. So total कितना हो गया? 50. Okay, so this is equivalent to 50. So that means for 50 you are getting 1 volt. Okay, now what is this number? Digital equivalent.
So you can calculate for how much you'll get for this one. So now I know digital, okay, this 50, okay, so you're getting 50 K into 1 volts. This is the formula. So from here I can get K equal to what, 50, okay, upon one, sorry, K or ulta ho gaya na, you get 1 volt here, you get 1 volt for 50 input, okay, so K will be 1 upon 50 volts, that means 20 millivolts. Now I know the K value, okay, ये कितना आ रहा है? 255. 250, very good. ये इसका 255, okay, so I know now K values, okay, now I can calculate for this digit, okay, I know the K value. So for largest value, okay, what I'll get K into digital input 255, okay, so K is 20 milliwatts into 255, okay, so the answer should come, बताइए आंसर क्या आना चाहिए? 5.1 volt, okay, so this is V max, so V max 5.1 volt answer. सर इस क्वेश्चन में मतलब we have to find the value of k, मतलब एक बाइनरी इनपुट के लिए आपको एनालॉग आउटपुट दे रखा है और दूसरे के लिए पूछ रहा है, तो सब प्रोपोर्शनल होता है। एक डिजिट के लिए जिस डिजिट के लिए दे रखा है, ओके, वोल्टेज, उससे आपने के का वैल्यू निकाल लिया। अब के का वैल्यू पता है, के इज व्हाट, के इज द वेट ऑफ एलएसबी। अब के का वैल्यू पता है तो देन नाउ यू कैन कैलकुलेट फॉर एनी डिजिटल इनपुट। ये डेफिनेशन है डी2 काउंटर की। ओके सर, मतलब ये 0011 के लिए दिया था। हाँ we have to find the value of full. yes sir. Okay, so now tomorrow next class we'll start your sequential circuit, okay, flip-flop memory with the digital circuit which have as a memory, okay, so यहाँ पे हम इसको end कर रहे हैं। We have to do we have done for digital to analog, okay, now we have to do analog for digital also, that we will do later once we complete the counter part, okay, so I'm stopping here. Any question? No, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.